हाँ हाँ, we are live. Hi everyone, welcome back to our weekly career classes. We'll wait for 2 minutes to let everyone join. Okay. Hello everyone. As you already know, I'm Muskan and welcome back to our weekly career classes. I'll be hosting today's live session. Thank you so much for joining in. Did you know there are over 50 specialized career paths in the medical sector beyond being a doctor or nurse? नहीं पता था ना? Don't worry. So today we are going to explore these fascinating and often overlooked opportunities in the medical sector. So let's begin this session. And if you all have any questions, you can use the live chat box and ask any question you want. We'll be taking up your question in this session. And to talk about our topic today, we are welcoming our very special guest, Dr. Harsh Prakash Gupta. Dr. Harsh is an MBBS intern and the co-founder at Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar Government Medical College in Kannauj. His dedication to advancing medical education and research is on the way to shape the future of healthcare in the region. So, welcome, Dr. Harsh. Thank you so much for joining us today. Thank you so much, Muskan, for such a vibrant introduction. Hello, Dr. Harsh. Can you hear me? Yes, I can hear you. Welcome, welcome. Thank you so much for taking out your precious time and joining us today. Am I So, audible? yes, clearly. We can hear you. Yeah. So, So, Dr. Harsh, can we start with knowing you a little bit? आपका educational background, आपने कहाँ से start किया, and how did you think of doing in an MBBS, and आपकी journey कैसी थी? Education का start कैसा था? सच्ची वाली स्टोरी बताओ या थोड़ी फैब्रिकेटेड? Students So, के I लिए passed story बताओ. my 12th standard in 2017. Then, मेरी age 16 थी, so I was not eligible for appearing for NEET. So, I took admission in Delhi University, Kirodimal College, for BSc honors in botany. Then halfway down the first year I realized कि it is a very long path and monetary returns are very low and very far, मतलब बहुत बाद में आएंगे. So after doing my first year in BSc I realized कि I should appear for NEET this year. Then in the second year I took the drop and prepared for NEET and appeared for it. Then I got selected in 2019 and started my MBBS journey. Uh, in GMC Kannauj. So it has been 5 years since, and now I am in my internship, uh, practicing under my seniors at the hospital. So yeah, I am currently fully dedicated to my medical career, which started as botanist 5 years back. Right. And ये मेडिकल सेक्टर में इतना कंपटीशन है, तो इस कंपटीशन की वजह से आपके लाइफ में क्या स्टार्टिंग में चैलेंजेस आए थे? अच्छा, ये आई जॉइंड, मेरा कंपटीशन एक्चुअली कभी था ही नहीं, क्योंकि मैंने बहुत कम लोगों के साथ प्रिपरेशन करी है. स्कूल में मैंने बायोलॉजी ली थी, तो इट वाज अ क्लास ऑफ ओनली 6 people. And in coaching also a 20-25 student batch was there, so I was not very much interactive with people. मैं कोचिंग जाता था, वापस आता था, मुझे पता है मुझे अपने पिछले दिन से बेहतर होना है, तो इट माय कंपटीशन वाज मी ओनली. मैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं था स्टूडेंट्स में कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, क्या मैं उनसे बेहतर हो जाऊं. मैं अपने साथ रहता था, खुद का पढ़ाई चल रही है, तो आई वाज ट्राइंग टू बिकम बेटर देन मी फ्रॉम प्रीवियस डे. तो कंपटीशन तो है. ओनली out of total people appearing for NEET UG, only 2% get selected in government or private medical colleges, and that is a
huge filter. 98% people don't even Absolutely. get selected in the medical college, and even in the post graduation, I guess 10 to 20% people appearing for MD or MS exams get selected every year. Right. 80% don't even get a seat in the postgraduate medical field. एग्जैक्टली सो आपने कैसे वो कंपटीशन का जो फियर होता है, एक जो फेलियर का फियर होता है कि यार 90% लोग नहीं क्लियर कर रहे हैं एंड क्या पता कि मैं 10% में हूँ या नहीं हूँ, तो वो आपने वो फियर को कैसे टैकल किया और कैसे स्टिल यू मैनेज टू कम आउट दिस गुड? फोकसिंग ऑन माई स्टडीज, मतलब मेहनत करो, बस कंसिस्टेंट रहो अपनी मेहनत। सो देयर इज नो शॉर्टकट फॉर मेहनत? शॉर्टकट नहीं होता कुछ, शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत करनी है बस, और कंसिस्टेंट रहना भी नहीं पढ़ाई में, सिंपल सा आंसर है इसमें कुछ सो कंसिस्टेंसी इज द की। हम्म, एंड ठीक है, तो अभी जैसे जैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, बहुत सारा मार्केट शिफ्ट हो रहा है, तो मेडिकल सेक्टर में भी बहुत सारे ऐसे नए करियर्स या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग करियर्स हैं जिनके बारे में स्टूडेंट्स को पता नहीं है। लोगों को बेसिकली नर्स और डॉक्टर के अलावा बहुत बहुत कम करियर ऑप्शन के बारे में पता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली इस टॉपिक पे ही रिलेटेड है। सो कैन वी स्टार्ट विद आवर टॉपिक टुडे एंड वी कैन प्रोसीड विद आवर प्रेजेंटेशन नाउ? yes, of course, I'll start with it. यस। So we'll start with an activity. I want your participation in this. Can we close our श्योर। eyes, and I'll say a word and you tell me what picture comes to your mind when I say that word. Let's close our eyes, and when I say the word doctor, what comes to your mind? What can you see in front of your eyes? वाइट एप्रन, मेडिसिन, हाँ, इंजेक्शंस। हाँ, हाँ। स्कूल में हमें सिखाते हैं ए फॉर एप्पल, रेड कलर एप्पल, बी फॉर बॉल, बीच बॉल होती है, बास्केटबॉल होती है, डी फॉर डॉक्टर सिखाते हैं, एक पिक्चर बनी होती है, एक आदमी है, वाइट एप्रन पहना है और स्टेथोस्कोप है। उसके अलावा अगर सेकंड इमेज देखें तो एक सर्जन की आती है माइंड में, वियरिंग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट विद अ स्कैल्पेल एंड अ मास्क, वर्किंग इन अ ऑपरेशन थिएटर। This is the most common imagery that is formed in our mind when we hear the term doctor for the first time, because our brains are trained that way, and the type of doctors we are exposed to in our daily lives कि 500 रुपीज दिए, कंसल्टेंट के पास गए, एक ऑफिस में बैठे, प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, तो वो इमेज रहती है माइंड में कि अच्छा ये ही तो डॉक्टर है, और कौन होता है। तो विल टॉक अबाउट और कौन कौन हो सकते हैं डॉक्टर्स। द नेक्स्ट एक्टिविटी इज कि इन 6 images में से यू हैव टू आइडेंटिफाई हु इज अ मेडिकल डॉक्टर अमंग देम। कैन यू स्पॉट देम? मुस्कान? सो द मैन विद वाइट एप्रन। Yeah, and some people would say Dr. Deepu Seven because he's wearing a stethoscope. But I would like to tell you करेक्ट। that all of them, these 6 people, are medical doctors. Dr. Naresh Trihan, a doctor who turned a ओके। healthcare manager. Dr. Deepu Seven, he is a doctor who turned entrepreneur. Uh, the founder of Marrow, it is a coaching app for postgraduate aspirants. Next is Dr. Anil Menon. He is a physician turned astronaut. Why he turned into an astronaut, I will tell you in further slides. Next is Dr. Devdutt Patnaik, a doctor turned mythologist and a writer. Then Dr. Manushi Chiller, everyone knows her. And Dr. Gaurav Gupta, he is a dentist turned stand-up comedian. So we have to kill that stereotype of doctors being a consultant. It is it might be kind of boring to imagine that imagery, for me at least. So these all are also doctors. So before addressing what are unpopular career options, I would like to raise 2 questions, and as we answer those, we will realize कि कौन से unpopular career options हैं. First, we'll understand what is an educational path. Brief, ऑलराइट। 1 minute में. अंडर ग्रेजुएशन MBBS करी, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन या तो MD MS, देन सुपर स्पेशलाइजेशन DM या MCA. सिंपल करियर पाथ, UG PG सुपर स्पेशलाइजेशन, एंड आफ्टर every degree a doctor can practice as a clinician.
they are allowed to practice as a clinician, they get a registered number. This is the conventional educational path of a doctor. But at any point in this path, they can pivot. They can pivot their career from medical to something that they like. But where should they pivot? I will answer this in a while. The second question is, what subjects do we study during our 5.5 years of MBBS that we know about? Most people know about these subjects: ENT, ophtha, medicine, psychiatry, derma, surgery, ortho, radio, anesthesia, obs, gynae, pedia, patho, micro. We all have seen these kind of doctors: eye doctor, nose doctor, ear, nose, throat doctor, bone doctor, radiologist, child doctor, doctors who give us lab reports. But there are six subjects that most people don't know about or rarely know, have heard about them. These are anatomy, physiology, biochemistry, pharma, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन. आई वुड लाइक टू एम्फसाइज, ये मैंने भी कभी नहीं सुना था एमबीबीएस में आने से पहले कि ऐसा भी कुछ होता है. एंड फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टेक्नोलॉजी. तो जो पहले दिखाए डॉक्टर्स वो तो क्लिनिशियन बन गए, लेकिन जिन्होंने इन सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइज किया है वो अपने करियर में क्या करते हैं? वो क्लिनिक्स में तो नहीं बैठते. हमने तो कभी देखा नहीं कि फार्मा का कोई क्लिनिशियन बैठा हुआ है या फॉरेंसिक का कोई क्लिनिशियन बैठा हुआ है. तो ये लोग क्या करते हैं? तो ये है अनपॉपुलर करियर ऑप्शन जो अभी आई विल टेल. So these are the unpopular career paths in medical sector. I'll go through them in brief in a minute. Healthcare management, research, public health, medical writing and journalism, pharmaceutical industry, health informatics, medical education, medical law and ethics, entrepreneurship, medical technology, and non-profit and NGOs. Out of these 11, I will discuss 5 of them in a little bit detail. Okay. So first is healthcare management. एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, रियल लाइफ एग्जाम्पल है. अभी इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री. ठीक है, सो मेनी पीपल, सबको कोई ना कोई बीमारी होगी, तो हेल्थ केयर पे बर्डन बढ़ेगा. अब एक साथ एक हेल्थ केयर फैसिलिटी पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो एक साथ सबको नहीं देख सकते, तो उनको मैनेज करने के लिए कुछ लोग चाहिए. वो लोग कौन है? दे आर नॉट डॉक्टर्स, दे आर हेल्थ केयर मैनेजर्स, जो उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करें, उनको ऑर्गेनाइज करें, उनके फाइनेंसेस को ऑर्गेनाइज करें और उनके रिकॉर्ड्स को ऑर्गेनाइज करें. हु आर दीज पीपल? दीज आर हेल्थ केयर मैनेजर्स, जो उनको मैनेज करेंगे. हाउ टू बिकम अ हेल्थ केयर मैनेजर? सिंपल, डू एनी अंडर ग्रेजुएशन डिग्री एंड देन परस्यू अ पोस्ट ग्रेजुएशन in post-graduation MBA in health administration. The other 2 degrees are MHA and MPH, Management in Health Administration and Management in Public Health. बस उन दोनों की एलिजिबिलिटी है कि MBBS या BSc नर्सिंग किया, बट अदरवाइज यू कैन डू MBA after doing any under graduation, and then you can get entry level positions like records manager, medical budgeting in public and private hospitals, health insurance companies, consulting firms, and NGOs and health organizations. So this is a path and demand of healthcare manager. Now you ask कि अभी तो ऑडियंस 9th to 12th स्कूल में है, वो तो अभी यूजी कर नहीं रहे हैं, तो अगर उसे जाकर हेल्थ केयर मैनेजर ही बनना है तो स्कूल में कैसे स्टार्ट करे? तो एक मैनेजर को क्या सोचना होता है डेली लाइफ में? उसे एक टीम में काम करना है, उसे डिमांड्स और सप्लाई को एनालाइज करना है, और जो भी माइंड में चीजें आई हैं उन्हें कम्युनिकेट करना है, इधर वर्बली और इन रिटन. तो दीज 3 skills are extremely important that can be developed from the school life: the leadership skills, communication skills, and analytical skills. By participating in various school activities like annual functions, presentations, playing sports in school, and multiple other things like that. So this was about healthcare management. A healthcare manager will not sit in a clinic. He will sit in an office in a hospital and manage what is going on in the hospital, where the resources are being allocated, where the money is being allocated, where the human resources are being allocated, and everything. Next is medical education. I heard and read somewhere that the best form of learning is teaching. जब आप किसी को पढ़ाते हो तो फिर उससे आप भी सीखते हो. And there is a moral responsibility of doctors to pass on the medical knowledge that they have learned through 5 years. Hippocratic oath में बताते हैं कि जो मैं सीख रहा हूं वो मैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी बताऊंगा. क्यों? Because this is important for ceaseless existence of medical knowledge. ठीक है, तो
टीचिंग करने के लिए यहाँ कोई बीएड की डिग्री नहीं चाहिए. You do undergraduation, post graduation, become a clinician, and side by side practice as a teacher in a private or public institute. And what are the opportunities for medical education? It's simple. You can either become a associate professor, assistant professor, lecturer, demonstrator, or professor in a uh, medical college, or you can you can teach NEET UG aspirants or NEET PG aspirants. And on a smaller scale, you can take home tuitions and everything if you feel like. And what skills are important? You communicate with people, you communicate with students. So you need very strong interpersonal skills, empathy, sympathy, understanding what your student is thinking even before they speak. And you need to be creative, how to communicate most complicated knowledge in very simple and creative ways. And the third one is communication skills, dealing with people, communication, transfer of knowledge, very important. This was about medical education. Now, next is biomedical research and entrepreneurship. I will talk about both of these together, research and entrepreneurship. So, there are two words, a researcher and an entrepreneur. I feel and I have realized that there is no difference between a researcher and an entrepreneur. Why? I will summarize this in a single line. Both of them aim to solve a problem. एक रिसर्चर भी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, एक एंटरप्रेन्योर भी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है. एंटरप्रेन्योर कैसे सॉल्व कर रहा है? वो सोसाइटी में लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करता है कि अच्छा कि कैब नहीं मिल रही है तो मैं एक ऐप बना दूं जो कैब ऑर्डर हो जाए या घर पे खाना आ जाए, जोमेटो बना दूं, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करे. Researchers is also doing the same thing. They identify gaps in the knowledge of the medical field कि अच्छा हमें चार चीजें पता है इस डिजीज के बारे में, फिफ्थ नहीं पता है. So I will design an experiment and find out this fifth thing. और चार चीजें अच्छे से पता है, फिफ्थ चीज मुझे अच्छे से नहीं पता. दिस इज नोन एज ग्रे एरियाज इन नॉलेज विच इज नॉट कंफर्म. सो अगेन आई विल डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट, सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड ऐड टू द नॉलेज. तो माइंडसेट दोनों का सेम है. तो एक एंटरप्रेन्योर कब बन सकता है और रिसर्चर कब बन सकता है? एजुकेशनल पाथ के बारे में आई टॉक. अपना वही नॉर्मल यूजी और पीजी किया, वो करते करते यू गेट एक्सपोज टू लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ईदर इन मेडिकल सेक्टर और इन personal lives of people, and then those problems that you identify, you work to solve them. So you can either do research to solve them, or you can do a business form, make a product, make an app, software, hardware, anything. So both careers go hand in hand. And let's talk about demand. For research, I will like to bring your focus on the COVID era. Thousands of research papers in 2 years आ रहे हैं, रिसर्च चल रही है. क्यों? क्योंकि वी हैव टू अंडरस्टैंड बहुत तेजी से. तो कौन करेगा अंडरस्टैंड? रिसर्चर अंडरस्टैंड करेगा. नेक्स्ट इज एन एंटरप्रेन्योर. तो डॉक्टर हर्ष, एक्चुअली हमारा एक और सेशन हुआ था इसके पहले, हाँ. सम रिसेंटली सम टाइम बैक. तो उसमें भी एक डॉक्टर आए थे, तो उन्होंने बायो रिसर्चर्स के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट यूज किया था. उन्होंने बोला था कि पीपल से द नेक्स्ट बेस्ट थिंग टू गॉड इज डॉक्टर्स, बट उन्होंने बोला था कि एक्चुअली द नेक्स्ट बेस्ट थिंग टू गॉड इज बायो मेडिकल रिसर्चर्स एंड बायोटेक्नोलॉजीज, बिकॉज वो जो मेडिसिन बनाते हैं हम सिर्फ वही रिकमेंड करते हैं लोगों को. मतलब एक्चुअली प्रॉब्लम को ढूंढना और उसको सॉल्व करना वो बायोमेडिकल रिसर्चर्स करते हैं, और डॉक्टर सिर्फ एक मीडियम है उस रिसर्च को पेशेंट्स तक पहुंचाने का. सो डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? आप कुछ इसमें ऐड करना चाहते हो? मैं एक चीज ऐड करूंगा इसमें कि आई फील अ रिसर्चर इज नॉट अ पर्सन, इट इज अ माइंडसेट. A researcher is not a person, it is a mindset. Research is all about observing something, thinking about it, and questioning and finding answers to that. A practicing clinician can also do that. It is true कि एक a plain doctor who is not doing a researcher mindset, वो observe, think and ask नहीं कर रहा है, is वो सिर्फ प्रिस्क्राइब कर रहा है मेडिसिन को, बट अ रिसर्चर इज एक्चुअली डेवलपिंग, टेस्टिंग एंड ब्रिंगिंग इनटू द मार्केट दोज मेडिसिन. तो हाँ, थोड़ी हायरार्की है कि रिसर्चर इज क्लोजर टू क्रिएटिंग समथिंग एंड समवन हु क्रिएट समथिंग इज गॉड, बट नॉट, डॉक्टर्स आर नॉट गॉड. आई वुड लाइक टू हाईलाइट दैट, क्योंकि ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है.
इस पे मेडिको लीगल इश्यूज आता है, but that is Yeah. someone who is creating something that alters human life for better or worse, and God is also creating something that alters human life for good or bad. So it is Yeah. a closer thing to God, and a practicing clinician who is not creating, just prescribing, is might not be as good as a researcher. It's But just a medium. yeah, it's just a medium. It's just a medium. Yeah, so, like yeah, it's just a medium. So Okay, should I okay. We continue can with proceed with PPT? the next. Yeah. Yeah, 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 yeah. So opportunities for biomedical research, as I said, once you enter the uh, educational path, as I described earlier, once you enter MBBS, you get exposed to a lot of opportunities. I would not go into detail because that would become more technical, but बस इतना ध्यान रखना है कि एक बार एमबीबीएस में आ गए तो रिसर्च किस पे करनी है, कैसे करनी है, सब सीख जाओगे स्कूल। बट एक बायोमेडिकल रिसर्चर बनने के लिए फर्स्ट यू हैव टू एंटर इनटू एमबीबीएस. इट इज अ less known unpopular career path in medical field, but to pursue it you have to enter the MBBS field first. And again, entrepreneur or researcher के लिए curiosity and ability to question even the question, ये सबसे important skills है, and you inculcate these things in school. I would like to give my example. We studied an experiment of Gregor Mendel, the P experiment in school in class 12th. So that gave me the ability to formulate an experiment. मैंने एक रिसर्च करना, एक्सपेरिमेंट करना 12th क्लास में उस एक्सपेरिमेंट से सीखा. तो school books have every kind of exposure you can get, but you have to pick it. You have to pick it up in your school times. Entrepreneurship, same skills: observational, problem solving ability, leadership, and team. These are universal skills. Next is medical law and ethics. On daily basis, in hospitals we encounter a lot of patients. किसी के साथ अच्छा होता है, किसी के साथ खराब कभी कभी हो जाता है. जिनके साथ खराब हो जाता है उनके अटेंडेंट्स कभी कभी they become violent and they file cases. So when you are altering with human life, it becomes a legal issue as well, because you can do it for good as well as for bad. So people file cases, doctors get into legal cases. So there is a separate set of people dealing with those problems. This is known as medico legal issues. So either lawyers specializing in medical field deal with these issues, or some doctors after MBBS pursue post graduation in specialization in medical legal cases, and they themselves help practice this medical legal law. So demand is great. Human है, before doctors we are humans. गलतियां होंगी, cases होंगे if we are not careful. So उनको prevent करने के लिए, उनसे बचने के लिए, उनको defend करने के लिए कुछ लोग चाहिए. वो लोग हैं doctors working in medical legal aspects, and that there is the demand. The demand for medical legal sector is not as high as the previous sectors, but it is still there. It is an unpopular career options कि मेरे को तो law में भी interest है, पर मुझे MBBS भी करनी है. So this is the field for me. And starting early, you have to debate in the court. You have to judge what is right and what is wrong, and you have to communicate what you are thinking. So these three skills are extremely important. And now this slide is my favorite. I would like to give an analogy. We live near the sea level, ठीक है? And humans are curious beings. हमें तो horizontal plane में भी move करना है, vertical plane में भी move करना है. तो as a curiosity rises कि एक ह्यूमन स्कूबा डाइविंग का मास्क पहनेगा और सी लेवल में नीचे जाएगा, उसके ऊपर वाटर का प्रेशर इंक्रीज होगा, तो उसके हेड, आईज, नोज, थ्रोट, ईयर्स, लंग्स, ब्लड वेसल्स, फिजियोलॉजी ऑल्टर होगी और डिजीजेस क्रिएट हो सकती है. सिमिलरली जब हम राइज अप करते हैं, यू माइट हैव एक्सपीरियंस्ड योरसेल्फ कि प्लेन में जब ट्रैवल कर रहे हैं, आवर ईयर्स फील वियर्ड, एंड इफ इमेजिन इफ वी लीव दैट एटमॉस्फेयर एंड गो इनटू स्पेस, वहां तो और ज्यादा ऑल्टर हो जाएगी हमारी फिजियोलॉजी. अब वहां पर हम बीमार पड़े, अर्थ पे बीमार पड़े थे, हमने अपना प्रैक्टो खोला,
अपने सिम्टम्स डाले, डॉक्टर मिल गया हमें। बट क्या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हम प्रैक्टो यूज कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। वहां पर भी डॉक्टर्स जाते हैं फ्रॉम नासा, एज आई मेंशन्ड अर्लियर, द पिक्चर ऑफ डॉक्टर Anil Menon. He was a physician in a NASA space mission. So a team of astronauts also contain a person who is a doctor to look after their health. So this sector is booming right now. As far as ISRO is concerned, they are starting their first space mission, Gaganyaan, spaced manned space mission. So doctors will be needed to take care of their health. And similarly, space tourism has started in the West. SpaceX is an example. So they will also need doctors. And as this sector booms, the demand will also increase. So yes, doctors can also be an astronaut. I was very fascinated by this thing in my first year. My teacher, like I am telling you about unpopular career options. In first year, our teacher also told about unpopular career options. So this was the most fascinating thing that I looked at कि अरे डॉक्टर एस्ट्रोनॉट भी हो सकता है क्या? मुझे लगा एमबीबीएस में आए तो चलो एस्ट्रोनॉट का सपना खत्म हो गया, लेकिन नहीं. After doing MBBS, you can still become an astronaut, but the path is a little difficult, very less explored. So you have to put your heart and mind into it without thinking about the monetary returns. I would like to mention one more thing. कि ये सारे unpopular career options में monetary return थोड़ा कम है as compared to conventional medical path. So you have to think carefully. You That are was you? my next question. कि Yeah. हम इतने सारे करियर्स के बारे में बात कर रहे हैं, बट क्या ये एक्चुअली compete कर सकते हैं फ्रॉम एन एक्चुअल एमबीबीएस डॉक्टर? जो सर्जन्स होते हैं, क्या उनके इनकम के साथ ये compete भी कर सकते हैं, या दूर दूर तक कोई रिलेशन भी नहीं है? See, competition तो नहीं है obviously. You should pursue what satisfies your soul the most. फरहान कुरैशी की लाइन है, मेरी गाड़ी राइट, छोटी होगी, घर छोटा हो गया, पर मैं खुश रहूंगा. तो खुश दैट इज होगा। वेरी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि खुश रहना ज्यादा जरूरी है. टीचर ऑल्सो सेड कि एक बार तुम एमबीबीएस कर लोगे तो पैसा इतना होगा कि संभाल नहीं पाओगे. तो मॉनेटरी रिटर्न्स आर एनफ, बट आर योर डिमांड्स हायर देन योर मॉनेटरी रिटर्न्स? दैट इज इंपॉर्टेंट. तुम 1 करोड़ हम्म। कमा रहे हो एक साल में, यू हैव 1 करोड़ टर्नओवर, बट योर डिमांड्स आर हायर देन दैट. That हम्म। is a problem. But a person earning like 12 lakhs a year, and they need only 5 to 6 lakhs to sustain their life in a year, they हम्म। are in a better situation. So the thing is about your wants. है ना? एंड आई So बिलीव अर्निंग लिमिटेशंस किसी भी सेक्टर को लेके हम एक लिमिटेशन सेट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एज लॉन्ग एज समवन इज नॉट एक्सप्लोरिंग दैट सेक्टर और दैट फील्ड या दैट पर्टिकुलर रोल, वो वहां पे जाके न्यू अपॉर्चुनिटीज और अपना करियर को एक्सेल कर सकता है वहां पे जाने के बाद. एंड कोई भी लिमिटेशन सेट करना किसी भी रोल पे इज नॉट वेरी सही. इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन कि हम वहां पे बोले कि नहीं, इस रोल पे आप इतना ही कमा सकते हो, बिकॉज नोबडी yes, नोज कि कौन सा रोल कहाँ तक जा सकता है, एज लॉन्ग एज वी आर exactly. नॉट एक्सप्लोरिंग इट. We are doing kind of a podcast. Would have anyone imagined कि आज से 5 साल पहले की podcast will boom so much? किसी हम्म। एक दो लोगों ने एक्सप्लोर किया और वो बूम कर गए. तो ऐसे ही अभी जो एग्जैक्टली. अनपॉपुलर करियर पाथ्स हैं, छोटे छोटे छोटे, वो कितना बूम करेंगे फ्यूचर में वो किसी को नहीं पता. बट यू हैव टू गिव योर हार्ट एंड सोल टू इट, और ज्यादा रिटर्न में एक्सपेक्ट नहीं करना. आई बिलीव कि वी आर फुल ऑफ नॉलेज, एंड एज फार एज आवर हेल्थ इज गुड, हमें without expecting any returns we should give to the community, explore and add to the existing knowledge. और रिटर्न में ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए. मिनिमलिस्ट लाइफ रहेगी तो we'll be at peace with ourselves. I have seen many doctors की, हमारे seniors की peace में नहीं है, even if they are practicing very good. You were saying something. या. एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, जिन करियर्स के बारे में हमने बात किया है, सो क्या यहाँ पे गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज भी
पॉसिबल हैं, अवेलेबल है। बिकॉज अभी भी हमारा जो एक कोर माइंडसेट है हमारे पेरेंट्स का, या हमारे जो मेंटर्स होते हैं, हमारे ऊपर जो टीचर्स होते हैं, उनका एक बहुत हैवी प्रेशर होता है इंडिया में टू परस्यू फॉर अ गवर्नमेंट जॉब रेदर देन फॉलोइंग अ प्राइवेट जॉब। तो जिन करियर ऑप्शंस के बारे में हमने बात की, जैसे मेडिकल लॉ हो गया, बायोकेमिकल रिसर्च हो गया, तो इन सब करियर ऑप्शंस में क्या गवर्नमेंट जॉब्स भी अवेलेबल हैं? यस, आंसर इज यस। देखो मैं बताता हूँ इसमें, जैसे हेल्थ केयर मैनेजमेंट है, तो जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, तो देर इज अ डिमांड, वहाँ पे जरूरत है हेल्थ केयर मैनेजर्स। ठीक है। नेक्स्ट इज मेडिकल एजुकेशन। और सीनियर्स जो हमारे डिपार्टमेंट में हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, they are first clinicians and then they take out 1 to 2 hours of time in their week and teach us. तो यहाँ भी डिमांड, यहाँ भी अपॉर्चुनिटी है प्राइवेट सेक्टर, सॉरी पब्लिक सेक्टर। Next is biomedical research. In this section of opportunities, I have mentioned STS by ICMR, Indian Council of Medical Research. I myself has submitted a research paper to ICMR and it got selected. I got a stipend and a certificate. So for MBBS students, MDMS students, uh, there is an opportunity by ICMR. You can submit your research papers and they will give you some monetary returns and certificates for it if the research is good enough. So हाँ, बायोमेडिकल रिसर्च में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। इनफैक्ट बायोमेडिकल रिसर्च में प्राइवेट से ज्यादा पब्लिक सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज। ठीक है। नेक्स्ट इज एंटरप्रेन्योरशिप। सो स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया फॉर एनी सेक्टर। इसके मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में आइडिया नहीं है, बट होंगी, बहुत ज़्यादा नहीं होंगी लेकिन होंगी जरूर। नेक्स्ट इज मेडिकल लॉ एंड एथिक्स। यहाँ इसका भी मेरे को बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, दिस इज वेरी लेस एक्सप्लोर्ड ऑन माई पार्ट। सो आई विल से येस, देयर आर अपॉर्चुनिटीज, बट व्हाट एग्जैक्टली आई डोंट हैव ग्रेट इनसाइट इन। सो हाँ, है मेडिकल प्राइवेट, सॉरी पब्लिक सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज। ऑल राइट, ऑल राइट। एंड ग्लोबली इन करियर ऑप्शंस का क्या स्टेटस है? मतलब ग्लोबली कितना कॉम्पिटिटिव मार्केट है, या कितनी अपॉर्चुनिटीज है इन सब सेक्टर्स में, इन सब रोल्स में? I'll start with biomedical research. श्योर श्योर। Our country is the largest population on this earth, contributing around 15 to 20% population of the planet. But the contribution to the research papers published every year from India is just 4%. That is a very less number as far as the total population of our country is concerned. So, and Asian race is have high IQ, as we all know. Western world hires us in their teams to perform experiments, to give their IQ into it, give their wit into it, give their expert opinions into it. So if you are good enough and good qualified and have appropriate skills, they will hire you for being a part of their research teams. Next is entrepreneurship. इंडिया से बाहर मत जाओ, इंडिया में अपना कुछ करो, स्टार्टअप, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। वेस्ट में होगी भी तो मत जाओ, इंडिया में ज्यादा बेहतर होगा, इसके लिए मैं बस इतना बोलूंगा। नेक्स्ट इज मेडिकल एजुकेशन। I have very less idea about this as far as the global aspect is concerned. Healthcare management, yes. Similar concept, growing population, growing their healthcare needs, need great managers who have knowledge in healthcare system. So we need healthcare managers in the West as well. Next is medical law and ethics. Again, very less explored topic on my part, so I would not mention anything that which I don't know about it. या दैट्स टोटली फाइन। एंड जैसे हमने भी बात की कि इंडिया में बायोमेडिकल रिसर्च में, इवन आफ्टर बीइंग सच अ ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, स्टिल हमारे इंडिया में से 4% पॉपुलेशन ही इसमें कंट्रीब्यूट कर रही है। सो आर वी सेइंग कि दिस market has bigger opportunities and yet it is less competitive? Yes,
The reason for very less contribution is lack of Awareness. positive reinforcement. No, not awareness. Lack of positive reinforcement. कि बच्चे ने होमवर्क कंप्लीट किया, लेकिन अगर उसे टॉफी नहीं मिली तो फिर वो दोबारा होमवर्क नहीं करेगा. सिमिलरली इंडिया में जो लोग रिसर्च करते हैं उनको मॉनेटरी रिटर्न्स बहुत कम है एज ऑफ नाउ. दे आर इंक्रीजिंग स्लाइटली, स्लाइटली एंड ग्रेजुअली, बट बहुत ज्यादा नहीं है. तो इफ लेट्स टेक माय एग्जांपल कि मेरे पास चॉइस है कि मैं क्लिनिशियन बन के प्रैक्टिस करूं या फिर मैं रिसर्च करूं, तो मैं रिसर्च तभी चूज करूंगा व्हेन आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट इट. इफ आई एम मनी माइंडेड कि मेरे को नहीं, मेरे टाइम हो गया भाई, मेरे को थोड़ा पैसा चाहिए, अर्न करना है अच्छे से, तो मैं रिसर्च चूज नहीं करूंगा, मैं क्लिनिशियन, आई विल प्रैक्टिस एज अ क्लिनिशियन. तो अपॉर्चुनिटी है, कंपटीशन कम है, बट रिटर्न्स बहुत और भी कम है, इसीलिए लोग परस्यू नहीं करते रिसर्च. सो यस, आई द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस कि अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, कंपटीशन कम है, बट उसका रीजन ये है क्योंकि वहाँ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बहुत कम है ऑन इंडिया पार्ट. मेक तो सेंस, मेक सेंस. सो क्या डू यू थिंक कि वो 10 साल में या इन कमिंग 15 years दिस इज गोइंग टू बी चेंज एंड वहां पे भी हमें वो मॉनेटरी रिटर्न मिलने लगेगा जो डिजर्व करता है दैट रोल? आई डोंट थिंक सो. आई So डोंट थिंक सो. why would we suggest a student to pursue that career role? मतलब आगे चल के क्या उसका एक कोर इंटरेस्ट होने वाला है जो if a student is interested in biomedical research, तो वो अपने लाइफ का एक आगे जाके मतलब 10 to 15 years वो उस रोल से क्या एक्सपेक्ट कर सकता है इन अनपॉपुलर रोल्स से? The satisfaction you get when you find answers to your questions, वो रिटर्न, द जॉब सेटिस्फैक्शन, कि तुम माइंड में बहुत ज्यादा क्यूरियस क्वेश्चन था, तुमने एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया एंड यू आर गेटिंग रिजल्ट्स इवन दैट यू डिडंट इवन एक्सपेक्ट. तो उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलता है दैट इज वे हायर देन द मॉनेटरी रिटर्न्स. तो अगर if a student is willing to go for it, then this should be the motivation कि मेरे को क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने. इन माय सिनेरियो दिस इज द केस कि मेरे को decent amount of money if I earn, and after that I pursue research and answer my questions, answer my curiosity, so good enough for me in biomedical research. All right, so as we are reaching to the end of our session, मैं आपसे 3 expert tips पूछूंगी for our students, जो आपने अपने एक्सपीरियंस से, अपने चैलेंजेस से कुछ आपको एक नॉलेज मिला है, आपका विजडम मिला है, वो आप शेयर करो हमारे स्टूडेंट्स के साथ विद 3 tips. सो व्हाट आर दीज टिप्स जो आप हमारे स्टूडेंट्स को देना चाहते हो? देखो, फर्स्ट इज बी कंसिस्टेंट इन वॉट एवर यू डू. इसका रीजन मैं बताऊं कि कुछ लोग होते हैं वो एक ही काम जो बहुत बोरिंग होता है बहुत समय तक करते हैं और एक टाइम के बाद उसमें मैजिक क्रिएट होने लगता है. दिस गोज फॉर आर्टिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स, स्पोर्ट्स पर्सन लाइक विराट कोहली एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो. तो ये लोग एक ही चीज बहुत समय से कर रहे हैं और फील्ड पर वो कभी कभी कुछ ऐसा कर जाते हैं कि उन्हें खुद रियलाइज नहीं होता है कहाँ से आ गया. तो वो दैट पार्ट आई कॉल मैजिक, मैजिक क्रिएट होने लगता है एक आर्टिस्ट. ऐसी एक सर्जन है, फ्रॉम पास्ट 15 years ही इज डूइंग लॉट, बहुत सारी सर्जरी करा है, लेकिन एक उसके लाइफ में एक चैलेंजिंग केस आया और उसे पता नहीं कैसे डील करना है. वो वही चीज, वही प्रोटोकॉल से वो सर्जरी किया, लेकिन वहां पर वो ट्रीट हो गया, तो उसे भी नहीं समझ में आया कि कैसे हुआ. तो वहां मैजिक क्रिएट होने लगता है, लेकिन वो कब हुआ? 15 साल बाद. तो बी कंसिस्टेंट. द फर्स्ट थिंग इज दिस कि बी कंसिस्टेंट. कोई एक या दो चीज पकड़ो और उसे बहुत लंबे समय तक करो, मैजिक क्रिएट होगा. आर्टिस्ट जो होते हैं ना, वो बहुत समय से अपनी आर्ट फॉलो कर रहे होते हैं और फिर मैजिक क्रिएट होने लगता है उनकी आर्ट में. उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती कि इसको कोई प्रोटोकॉल बता दो, ये पेंटिंग मैं इस तरह बना दूं तो ऐसे नहीं. वो मैजिक क्रिएट होने लगता है. मम्मी खाना बना रही है 10 साल से, अच्छा क्यों लगे? 10 साल से बना रही है और मैजिक क्रिएट हो रहा है उसमें, इसीलिए अच्छा लगे. ठीक है. सेकेंड थिंग इज कि
stay curious always. अब मेरे पास अभी एक कप रखा है, तो मैं अगर इसको देख के क्यूरियस हो जाऊं तो कैसे होऊंगा कि इसकी ऐसी शेप क्यों है, इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, इसमें हैंडल ऐसे कर्व्ड क्यों है, स्क्वायर क्यों नहीं है. दिस क्वेश्चंस माइट साउंड absurd कि मैं इसकी शेप जान के क्या कर लूंगा, बट दिस डेवलप्स अ माइंड सेट जो तुम्हारे करियर में बहुत हेल्प करेगा. मैं कब को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये एक टाइप की रिसर्च ही होती है, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च. तो तुम जब रिसर्च में एक्चुअली जाओगे या फिर मेडिको लीगल में जाओगे, इस पर्सन ने ऐसा बिहेव क्यों किया, इसने उस समय क्या पहना था, क्या इसने जो ट्रीटमेंट लिखा था वही किया या उसकी जगह कुछ और किया. तो ये उस दिन नहीं आएगा जिस दिन तुम एक्चुअली केस सॉल्व कर रहे हो, ये माइंडसेट स्टार्टिंग से डेवलप होगा. तो स्टे क्यूरियस, आस्क क्वेश्चंस अबाउट एवरीथिंग यू सी. एंड द लास्ट थिंग इज बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, कि लर्निंग कभी मत छोड़ो. अब ये कहते हैं कि मेडिकल फील्ड में तो पढ़ते पढ़ते बुढ़े हो जाते हैं, लेकिन वो किस रिस्पेक्ट में कह रहे हैं ये सोचो. उनका फ्रेम ऑफ माइंड है कि अर्निंग कब स्टार्ट हो रही है ना. एक बीटेक करके बंदा 4 साल बाद 22-23 साल की एज में ही अर्न्स इन लैक्स, ठीक है. बट अब एक डॉक्टर, अभी आई एम अबाउट टू टर्न 24, बट हमारी स्टाइपेंड इज नॉट दैट मच, है ना. हम जो एक्चुअल अर्न करेंगे वो अभी वी हैव मिनिमम 5 years, तो इसीलिए हमें टाइम लगेगा. बट अर्निंग स्टार्ट तो हो गई ना, तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है सोसाइटी का वो अर्निंग वाला है. तो बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर इन एनी फील्ड, किसी में भी हो. मेडिकल सेक्टर में तो बहुत जरूरी है. इसके लिए एक एग्जांपल दूंगा कि कार्डियोलॉजिस्ट है हमारे सीनियर, वो बताते हैं कि ही इज 50 नाउ, ठीक है. तो जो उन्होंने एमबीबीएस में पढ़ा होगा आज से 30 साल पहले, इट इज कम्प्लीटली ऑब्सोलीट. नए ट्रीटमेंट्स आ गए, नई डायग्नोस्टिक टेक्निक्स आ गई, तो उन्हें अब दोबारा पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि वो पुराना ट्रीटमेंट थोड़ा ना चलाएंगे कि भाई मैंने तो ये पढ़ा था, तो अब फिर से सीखा उन्होंने. तो यू हैव टू बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर. तो 3 थिंग्स ये कि स्टे कंसिस्टेंट इन व्हाट यू डू, स्टे क्यूरियस एंड बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर. ये किसी भी फील्ड में हेल्प करेगा, किसी भी फील्ड में, एजुकेशनल, नॉन एजुकेशनल, सब में. तो ये आई हैव लर्नड दीज थिंग्स. बोरिंग है सब, बहुत ज्यादा All बोरिंग है. right, all right. ये तीनों चीजें बहुत बोरिंग है, लेकिन All right. Thank you so much, हर्ष. आपका ये tips actually मैं भी याद रखूंगी for my ahead of career. ठीक है. So today we have run out of time. So as we wrap up today's session, I want to thank Dr. Harsh for sharing your insights with us. I hope you all got the answers to your question. If you still have any more questions, can we put on the slide page जहाँ पे we have put the QR code? Yes, yes. So, if you guys still have any questions, आप मेडिकल सेक्टर के बारे में पूछना चाहते हो या किसी भी करियर रिलेटेड क्वेरी आप पूछना चाहते हो हमारे साथ, so you can simply scan this QR code. This will take you to our web app where you'll be able to see an Ask Me Anything option where you can get answers directly from our expert counselors. So yeah, go ahead and explore and don't forget to hit that subscribe button below to stay updated. And thank you so much for joining us all today. And thank you so much, Dr. Harsh. Thank you so much, students. Have a fantastic day. thank you so much.